अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार। अल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तहार। Now for further bless this gathering, I would like to invite Muhammad Irshad Farnar, Muhammad Irshad from BSN second semester. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो हम में भी उसी नाम से राहत होगी। ये सुना है कि बहुत कब्र अंधेरी होगी, कब्र का खौफ न रखना ए दिल, हुआ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। कभी यासीन कभी ताहा कभी वालैलाया, जिसकी कसम मेरा रब खाता है, जिसकी कसम मेरा रब खाता है। कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी। उनको मुख्तार बनाया है मेरे अल्लाह ने, खुल्द में बस वही जा सकता है, खुल्द में बस वही जा सकता है, जिसको हसनैन के नाना की इजाज़त होगी। हश्र का दिन भी जब देखने वाला होगा, जुल्फ़ो लहराते वो जब आएंगे, फिर क़यामत में भी एक और क़यामत
जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। आप सबकी भरपूर तालियों में हम डायरेक्टर ऑफ उबैद नूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज डॉक्टर आलिया कैसर उबैद खान को अपने दरमियान वेलकम करते हैं। डॉक्टर आलिया कैसर उबैद खान के लिए भरपूर तालियां। Now we invite the student of BSN first semester for national anthem. Big round of applause for the student of BSN first semester. Please rise for national anthem. उस्ताद हूँ मुझे इसमें मलाल थोड़ी है, उस्ताद हूँ मुझे इसमें मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके रूज के लिए, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके रूज के लिए। यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए। ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। We are now honored to invite our respected principal, College of Nursing, Ubaid Noor Medical Institute, Mr. Mujahid Ali, to share a few inspiring words with us. Please welcome him with a huge round of applause. Bismillahirrahmanirrahim. Respected guests, respected colleagues and faculty members and students, Assalamu alaikum. It is both an honor and a privilege to stand before you on this significant occasion where we unite to celebrate two milestones here. One is the welcome party for our new inducted students of BSN semester first, and secondly International Nurses Day 2025. Allow me first to extend a sincere welcome to our distinguished guests and respected members of the healthcare and academic community. Your presence today is deeply appreciated and reflects your commitment to uplifting nursing education and practice. Secondly, to our new admitted first semester students, I offer my heartfelt congratulations and welcome you warmly into the academic and professional journey.
you are welcomed in College of Nursing, Ubaid Noor Institute of Sciences, Mianwali. You are beginning a journey of learning, discipline and purpose. A journey that will mold you into good professionals who not only save lives but also touch the hearts of the patients. And on the International Nurses Day, the theme for 2025 is Our Nurses, Our Future. Caring for nurses strengthens economies. This theme highlights the indispensable role nurses play in not only delivering healthcare, but in strengthening economic system and societal resilience. When we invest in our nurses, we invest in national health, prosperity and progress. Dear students and colleagues, let me take a moment to reflect on some core pillars that define the future of nursing. These pillars we must embrace and uphold through our professional journey. The first pillar is the education. Today it's rapidly changing the era of medical education, in which the knowledge we have gained today will be outdated in future, or tomorrow it will be outdated. So it is the necessity of the time that you have to continue your nursing education. Every day, new technologies, new knowledge, and all these things are integrating in our books and new knowledge and in new systems. As I often say, education is the fuel that keeps the lamp of care burning bright. And second one is the clinical experience. Technology may advance, but it can never replace the trained eye, steady hands, and compassionate presence of a skilled nurse. You have to expert your clinical expertise through mentorship and through hardworking, hands-on training and with reflective practice. And third pillar, I think it's the embracing of new technology. Modern nursing demands technological literacy. New devices, tools, and protocols enter our systems on the daily basis. It's our duty to master this, not merely to use them. Remember, technology is the tool, but the nurse is the soul behind it. And the last pillar, I think, is the research. We can generate our new knowledge through the research. As we know, the nursing is an art and a science. There are both things in this profession. The art part is the clinical expertise and the science part is your knowledge. And knowledge always grows with the research. And through research, students can engage in questioning, exploring new ideas and innovations. Dear students, let me remind you, you are fortunate because Allah Almighty has chosen you for this noble profession. Your uniform is not just a symbol, it is a promise of compassion, responsibility and services to the humanity. At the end, I would like to thanks to the management of Ubaid Noor Institute of Medical Sciences that they have invested more in the nursing education and services, and I also urge our leadership to continue prioritizing the nursing education on the priority basis. Again, at the last, I again welcome you all new students and happy International Nurses Day to all of us. थैंक यू सो मच सर। आप सबकी भरपूर तालियों में हम चेयरमैन ऑफ उबैद नूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज डॉक्टर अब्दुल हमीद खान एंड HOD ऑफ MLT डिपार्टमेंट को अपने दरमियान खुशामदीद कहते हैं। Dear juniors, today program is organized to make you feel at home and assure that
You are never alone the journey. We are truly glad that you chose Ubaid Institute of Medical Sciences to begin your professional journey. Your trust in us is valued deeply, and we promise to guide you, mentor you, and walk beside you every step of the way. I also congratulate to all the freshers on clearing their previous level to entering this new world. आप सबकी भरपूर तालियों में हम अपने जूनियर्स को मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू सो मच। ये सुबह है कुछ खास, ये सुबह है कुछ खास, सकाफत का है जश्न, रिवायतों का रंग, मोहब्बतों का फन, लिबास में झलक, जुबां में शीरीनी, दिलों में बसी है वतन की धुन, सुरों की है लय, कदमों की है थाप, हर फनकार है दिलों का ख्वाब। ये रक्स, ये नगमे, ये बोलती जुबां, ये रक्स, ये नगमे, ये बोलती जुबां, है फख्र की बात हमारी पहचान। और करें इस्तकबाल उन फनकारों का जिन्होंने जगाया है फन प्यारों का। आप सबकी भरपूर तालियां। स्टूडेंट ऑफ BSN सेकंड सेमेस्टर। Let's now move toward some cultural performing by our talented students of BSN second semester.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।